कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरी चंद्रमा गाव काम दुधा सुरेश्वर जो रंभा India has a lot of variety. The color, it's about the tradition, the religions. It's just the perspective that gonna matters a lot. They are right in their own sense, might be wrong to someone, but might be right to someone. I'm just basically a typical boy trying to live up on his dreams, trying to do something on his own. I can set an example for this. They love me playing for India. I felt really proud that I was representing India. I'm an esports player. And every esports player has that hunger to win. For us, the main goal is to become the best, nothing else. I think it's the right time for esports to take off in India. PUBG Mobile has now come into India and taken over. The accessibility for mobile devices is so strong and so easily available to the general public. Once PUBG came out with their mobile version, it took India by surprise. Started my journey playing PUBG Mobile, and I would always love India to be at the top. The do's and don'ts of PUBG or something like that, I don't know. I still don't understand what he's doing. But that was fantastic. This short clip will help you to understand how to aim properly and control recoil. Twitter, I ain't touring, I am anti-count message board kid did everything that I say I did. Don't believe me. It's gonna be your main man. It's gonna be Scout, and it has to be. Drop it down off bridge. The components on this I player. need to get that world level trophy out there. So being a new team, we got picked by one of the biggest organizations out there, that's Team Fnatic. And for us to prove ourselves, to prove our followers, to prove our fans, and to keep that name high. Yeah, my teammates would say that I'm the mistake maker, I guess, but I'm also the playmaker. I love to walk on the tightrope. Cold shower, that's true power. Let me catch my breath, let me snatch what's next. Comes the push right now. He does go down just standing in the rush. And the headshot will finish him off. Soul back. 1 versus 3. 1 versus 4, actually. Oh! Massive. Excellent play. Oh. Great taking currently no damage. Armami moving Forward. He does not make it. I just wanna read to you, baby, hold it up your head, baby, yeah, baby, yeah, baby, yeah, baby. When you practice hard, when you give your best and you lose, that's okay. And everyone can see that, especially the coach can see that these guys gave it all and lost. But if they don't give it all and they lose and they come up with some stupid excuse, I can figure it out. That is my job. Yeah, these guys, they got a very big opportunity. There are so many people who are dying for this chance. Every third person in India plays PUBG, I'm pretty sure about that. From a kid to an adult in an office, they play PUBG for sure. The first PMCO that happened in India, 11,000 or 12,000 teams applied for that tournament. This is the trophy that every team tries for, getting the hands on the PMCO World Championship. It's really tough to survive that competition. Being able to be called the champion in this is kind of like the milestone. This year's PMCO, the points has been changed.
So before it was like one team keeps winning, they get a huge lead, which is unbeatable. But now you can't get the huge lead if you don't have the kills. So if a team keeps on killing a lot of people, they're gonna get a huge lead. But if just a team wins with less kills and other teams starts killing more, the win doesn't matter because you need to have the skill to kill. If you don't have the skill, you cannot kill. Viper tries to move out. Existence will just finish that one. So from this new rule change, 3 to 4 teams are gonna benefit. One is Orange Rock Esports because they are damn aggressive. Right now, the best team in India is OR, being one of the highest skill set players and the amount of coordination and synergy they have among themselves. The other one is Team X. They've got 2 or 3 of the best assaulters out there in their team. They have one of the best players India has produced, Scout. VCAS just over the hill here, and Scout is looking for him. Plus always. 2 players behind the rock, one goes down. Then they have Ronak. Comes in the corner. Sees one, takes down one, there's just one left, sees him in the grass and will finish it. Apart from that, there's another team which is Team 8-Bit because they go for kills. 14 kills for Team 8-Bit. Mega. Here comes the massive push. There's absolutely no way he's getting away with that one. MX. Really bringing the swagger at the end of the game. Entity. These shots from Entity, that will be the whole team wide. These are the really big and good teams this year. They're like way too good at the game. I'm Team Soul all the way. They're my guys. My money's on them. Let's see how they do. Team Soul, 2 new players added into the team. Definitely they have Mortal, one of the most fan favorite guy. Guess. Oh, Model just standing his ground right now. And he got his back by Viper. Viper gets the knock, and it's going to be Carnage who's having Carnage spread around. It's going to be open. So we are going to work on being a much more aggressive team. We are still working on that actually. After that also we were having pressure to win, but like the fan expectations, the family expectations, that like they wanted us to represent India at that level. We reached that level, but now the pressure is to win it. My dad's name is Gajanan Sharda. My dad never knew about PUBG. He had no idea what kind of a game it is, but every tournament I'm playing, every game I'm playing, he's watching me. That makes me really happy that even though I didn't said him anything, I didn't teach him anything about the game, he knows so much about the games. He was born in Uttar Pradesh. Just after 1 year of getting married, he came to Surat to have something on his own. My father is a local packing material manufacturer and he's been doing this work for the past 20 years. भाई 1 मिनट बैठ जाओ अंदर पहले. पानी लेंगे. एक्चुअली मशीन तो सब इंडिया ही की बनी हुई है और इसको ग्लोटिंग मशीन भी बोलते हैं. और इसके अंदर एक बार में कम से कम 100 से 125 किलो मटेरियल वन टाइम में चला जाता है. अरे बापू को माल नहीं ले गए. अमेरिका से, यूरोपियन कंट्री से ही ये रॉ मटेरियल आता है और इसको फिर चारों तरफ से कट करना पड़ता है. आधा इंची, पौन इंची, जैसा वेस्टेज निकाल लो उसके ऊपर डिपेंड करता है. उसकी साइजें बनाते हैं, उसको बिछाते हैं, माल में सल होता है वो निकालना पड़ता है. I used to hate to go to that place. I used to hate to go to the place whenever my mom used to say, you are free at home, just go visit your dad, help him in his work. I was like, okay, I'll just go to my friend's house. वो अपनी दुनिया में बिजी था. दुनिया इनकी पबजी थी. खेलता जरूर था लेकिन दिमाग में ये रहता था इससे अपना कुछ मिलना तो है. ऐसा कुछ माइंड में था ही नहीं कि हमको इसमें कुछ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. इसलिए उसको ऐसा लगता था काम तो करना ही. काम करना ही करो. एक्चुअल में क्या है कि काफ़ी टाइम तक तो ये इतना बीमारी की वजह से ही हम मतलब उसको शुरू के काफ़ी टाइम तक तो बीमारी की वजह से इसके लिए परेशान रहते थे. मेन क्या है जो इसके प्रॉब्लम थी ना वो डॉक्टर पता नहीं कर पाए और उसको 2.5 साल तक कंटिन्यू हमने यूपी का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था.
मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के अंदर जो एशिया के टॉपर में से गोपाल के लिए हमने, मेरे को याद है कि हम लोग 10 से 15 दिन रहे थे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली हमारे लिए अलग शहर था, तो हमको वहाँ पे बाहर गार्डन के नीचे जो है वो पेपर डाल करके सोना पड़ता, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में केवल जो बच्चा बीमार है उसकी मम्मी ही रह सकती। जिस समय वो दिखाया था तो उसकी हाथ जो है वो इतने इतने से थे, और उसके अंदर से जो सिरिंज में ब्लड निकलवाना था, तो उसके लिए मैंने और पौन घंटे तक वो सिरिंज को यूँ ये हाथ को दबाते रहे, तब तक वो सिरिंज में ब्लड नहीं आ पाया। ये पोजीशन थी इतनी क्रिटिकल। तो बचपन की कुछ ऐसी यादें बीमारी के अंदर ही रही बस। When I was a kid, I used to dream like I want to play soccer for my country, like being in the Indian national team. I have a rule in my life. If you like something, just go achieve it. उसने क्या किया, स्टेयर पे चढ़ के छत पे जाके वहां से नीचे जंप करके भाग गया था। तो वो किसके लिए गया था? उसको फुटबॉल प्रैक्टिस करना था इवनिंग में, और उसको मैं जाने नहीं दे रही थी। तो मैं सोई थी, तो मुझे बिना बोले वो छुप के ऊपर से कूद के चला गया था। फिर तो मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने उसके फादर को फोन किया है, तो मैं कहाँ चला गया। फिर मैं दरवाजा खोल कर जाके वॉचमैन को पूछा, यहाँ मेरा बेटा गया क्या? तो वो बोला हाँ वो तो गया अभी। फिर मैं बोली कैसे गया? फिर वो इतना टफ है, टेरेस से नीचे कूदना आसान नहीं है। उसके फादर एक्चुअली, उसके पापा उसको बहुत प्यार करते हैं, तो वो तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, बट कभी कभी बोलते क्या कर रहा, अभी उसको बिजनेस में आना चाहिए। I have a thing in me, like I don't like anything, spoon fed to me. I like to make my own stuff. So later, no one can tell me like, okay, dude, you did it on because your dad gave it to you. No, I did it on my own. मेरे फ्रेंड्स में क्या बोले सब कि इंडिया में फुटबॉल का इतना प्रायोरिटी नहीं है, क्या वो फुटबॉल खेल के क्रिकेट खेलता तो ये होता। Among all the sports, football was my heart though. Basically, football was my life completely at that moment. I played professionally. I went to national level. I was in Kolkata for a professional Division 1 team tryouts. It's just one-time chance, man. You need to prove there. वो इतना अच्छा खेलता था, तो मैं उसकी कोच को पूछती थी, बोलते नहीं उस फुटबॉल में भी वो कैरियर बहुत अच्छा। तो उसका जर्मन तो पहले सपना था फुटबॉल प्लेयर, तो और उसको जाना था बर्लिन, तो मैं बहुत खुश थी। उसके लिए जब नहीं जा पाया तो मुझे बहुत दुखी हुई, और कुछ नहीं। So during the tryouts, I tore my hamstring. The second I knew that my hamstring's gone, the first thought in my head came was that, okay, what's the next time I'm going to start walking, or when is the next time I'm going to start playing? The doctor says me, dude, you need to stay in the bed for at least 6 months. And then I was like, okay, my dream's dead here. स्कूल में ना, सिमी के स्कूल में ना। हाँ। टुडे इज अ श्राद्ध डे, सो जो भी मेरे पूर्वज लोग चले गए हैं, अब इस संसार में नहीं है, तो उनको जो जो चीज़ें पसंद थी, तो मैंने आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे हाथ का खाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। My dad had passed away when I was just 4 years old. So a single parent raising up 2 boys in Mumbai is not actually easy. I believe that because sitting here, I know the amount of hardship she had to go through to raise us up. My husband loves lady's finger. He loves this cauliflower. I mean, आज हम और नमन, हम लोग जो भी हैं, आज उन लोगों के आशीर्वाद से हैं। आज वो लोग कोई भी नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनकी रिमेम्बरेंस हमारे माइंड में है, और उनकी ब्लेसिंग्स हम लोग के ऊपर है। We were short on finances. The major source of income at our home was my mom cooking food for probably bachelors and people, around. That's the only way my mom used to pay the bills, pay my education fee and everything. Yeah, that's how we survived. It actually cannot be expressed in words. That's all I can say.
I mean, words cannot describe how I feel about my mom. All going towards the center. सब लोग ऊपर जा रहे हैं. My mom was very nervous when I first started this thing. There was a time when I was playing, she used to, shout at me and she used to yell at me and say, go back and study, or, go back and sleep. But then now things are different. Now she's like, why are you wasting time sleeping? You should get back on streaming. With how many kills? I'm mortal more. I'm mortal more. Life goes on and you need to move on. And no matter how bad the scenario is, you need to go ahead in life too. I didn't have to find my new dream because I already had a passion of gaming. But it was me thinking that this passion can be a career. So I took my passion to a career. Now I am here with PUBG Mobile. और इंडिया में कैसे है, हमारे पेरेंट्स एक्चुअली उनकी थिंकिंग कैसी है, बच्चे के रियली कुछ इंजीनियर डॉक्टर ये कुछ बनना चाहिए. बिफोर 10 years एक्चुअली ई स्पोर्ट्स क्या है किसी को पता ही नहीं था रियली. तो उसके फादर बोलते तुम क्या कर रहे हो, काम पे ध्यान नहीं तुम्हारा. मेरा बच्चा का ये मैच चल रहा है तो मैं मैच देख रहा हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली तन्मय को देखना मुझे बहुत, मतलब स्काउट को देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हमको तो इसी चीज का बस ये है कि बचपन में इतना वो होने के बावजूद भी आज ये इस लेवल पे इसने मुकाम हासिल किया. When I got the offer to become a pro player from Orange Rock, took some advice from our friends, from our family, and they were like quite supportive in this thing. So they just said, it's about your dream. You always wanted to live this dream, so you're getting the opportunity. Don't miss it. अभी बच्चों को अगर गेमिंग हो, आजकल हर इंसान को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है लाइफ में. वो अगर इस माध्यम से आगे निकल गया तो हम लोगों को बहुत गर्व की बात. हम तो देखा को शाम को इनको चिकन का डिनर देंगे. हमको रियली नहीं मालूम चिकन डिनर होता है क्या. Hello, welcome to the PUBG Mobile Club Open 2019 Fall Split. The process to qualify for a finals is so grueling. When we formed Orange Rock, the guys never played together, so we set up a boot camp in Hyderabad for them to learn to be a team. We formed Orange Rock to win all the big events. The players on this team should be aiming for the best in the world. It's great as well. They know exactly where Retribution are. Almost there. Cover देना मैं knock नहीं होना चाहिए गाड़ी से उतर दूँगा. Luckily, Orange Rock still have a really good position on this top side. What an extra Molotov. Makes all the rats scurry around. MJ goes down. 22 kills going over to Orange Rock. A huge pickup for them. I did not know I would come back, but then there were, many factors. For example, there were so many teams in India now who have become very good at it. So it's going to be good challenging them now. Mortal looking to try and shimmy his way in as well as the circle down on its soul versus Orange Rock. They know exactly where he is. He knows exactly where they are, though. He goes out wide. Nice shot. The back is against three. Here comes the push right now. He does go down just standing in the rock. And the headshot will finish him off. We are adjusting and learning on to taking more kills and being more aggressive so that, by the time we get that chicken dinner, I'm pretty sure we're going to get around 10 to 15 kills. Everybody said it's what they want. Got my feelings all in a knot. Don't you worry, dust the table off. Put the record on. You can come along with me. Being a competitive player, if you're not confident, you can't survive the scene. We are not scared of anyone. If you're gonna be scared of anyone, you have to be scared of everyone. Having a big name behind us, that's Team Fnatic. We are not nervous about anything. We are really happy that we have a really good competition out there. It's a nice sports car, though. Love it. This is a beautiful car. The question is, can the play be beautiful as well? So my team right now, we are 5 members, and I know these guys have the talent. They have the caliber to win the tournament. They have the skills.
Ronak's so low. Too strong. Even so, Scout's having none of it. He wants to get the full team win. Coming to a close, Team Xbox now, the arbiters of death. If we get to hold the trophy at an international level, that would actually feel amazing. I'm enjoying the moment, and I don't want to wake up from this dream. So it's been a very big roller coaster for me, and it's still going on. I'm a professional PUBG Mobile esports player. फिर एक बार आप सभी का पबजी मोबाइल क्लब ओपन साउथ एशियन फाइनल्स में। मेरा नाम है रंजीत मांबा सीनियर पटेल और मैं हूं आपका होस्ट और मैं हूं यहां पे केडी जादव इंडोर हॉल में, जहां पे दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ 16 टीम्स लड़ेंगी एक दूसरे के साथ। और आज के दिन के अंत में हमें पता चल जाएगा कौन सी वो टीम होगी जो जाएगी ग्लोबल प्रीलिम्स में। ग्लोबल फाइनल्स में पहली 2 टीम्स को मौका मिलेगा ग्लोबल फाइनल्स में खेलने का, तीसरी से लेकर 5वीं टीम को मौका मिलेगा एक और प्रीलिम्स में जाने का, उधर से वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और दांव पे है 1.2 करोड़ रुपए। लेकिन उसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं मिलवाना चाहूंगा आपको हमारे अनुभवी एनालिस्ट से, केतन एंड ओशन। कैसे आप? सब बढ़िया। यहाँ पे क्राउड अगर अच्छा है तो हम लोग भी अच्छे हैं, बिकॉज क्राउड है तो हम हैं। बिल्कुल, हमसे ज्यादा क्राउड यहाँ पर एक्साइटेड, हम भी एक्साइटेड है बिकॉज आज उन 5 टीम्स पे ताला लग जाएगा। कौन सी वो 5 टीम्स हैं जो इंडिया को, साउथ एशिया को, अपनी कंट्री को, हर चीज को रिप्रेजेंट करेगी कुआलालंपुर के अंदर फाइनल्स में। एंड वहां जाने के लिए यहाँ से गुजरना आखिरी दिन 6 मैच, इट इज गोइंग टू बी क्रेजी। ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी क्रेजी। और फॉर्मेट की तरफ भी एक बार नजर कर लेते हैं, क्योंकि 5 दिन की टूर्नामेंट थी, ये 5वां दिन है। पहले 2 दिन थे प्लेन्स, हमारे पास थी 24 टीम्स, उसमें से टॉप की 16 टीम्स आई फाइनल्स में। उसमें से टॉप 2 टीम्स जो होगी आज के दिन के एंड में, जो क्यूमुलेटिव स्टैंडिंग्स होगी, टॉप 2 टीम्स को मौका मिलेगा ग्लोबल फाइनल्स में खेलने का और अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि बहुत सारी टीम्स ऐसी अभी भी आ सकते हैं ऊपर और लीड रहे। बात करें तो बहुत सारी टीम्स ऐसी भी जिनकी लीड बहुत ज्यादा, लेकिन यू कैन नॉट गेट कंफर्टेबल, आपको और कोशिश करनी होगी क्योंकि आपको रहना है टॉप पे टेबल के। तो दिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है केतन। एग्जैक्टली कल एनटीटी ने हम लोगों ने देखा कि इतना ज्यादा बढ़त आगे नहीं बढ़ाई जो उन लोगों ने लीड लेके बैठे थे वो लोग। बट अभी लास्ट वाला मैच जो उन लोगों ने वीकेंड में खेला, जहाँ पे नियो टॉप 3 तक लेके गया था अपनी टीम को, वहां पे आई थॉट कि थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट स्टिल वो एक सेकंड डिनर अभी भी चाहिए उनको, वो एक कंफर्मेशन कि हाँ वो जो 30-40 पॉइंट की लीड है वहां तक कोई आ ना पाए। बट सोल यहाँ पे कम बैक करके वापस आते हुए उन लोगों ने बताया कि फाइनल्स हमारा है एंड हम भी यहाँ पे खेल कर, उनके फैंस ने यहाँ पे जो चीयर करके दिखाया। एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ पीएमसीओ साउथ एशिया फाइनल्स। ऑफ कोर्स एक बार शेड्यूल की तरफ भी नजर कर लेते हैं ओशन, क्योंकि जो मैचेस होने वाले एरेंगल बहुत ही ज्यादा खेला जा रहा है, तो एक बार शेड्यूल की तरफ नजर कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एरेंगल खेला जाएगा। शुरुआत होगी उस ओजी मैच से, उसके बाद सैनॉक पे जाएंगे, फिर मेरा मार के अंदर जहाँ पर स्नाइपिंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इरेंगल विकेंडी इरेंगल, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है बिकॉज इरेंगल आपके रग रग में बसा होता है, बट देन फिर एक चेंज बीच में विकेंडी के नाम से आता है, जहाँ पर सारा का सारा गेम प्ले थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बट वापस से एरेंगल, एंड मेरे को लगता है फाइनल एरेंगल तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज वहां पर जो टीम 5th और 6th और 7th पोजीशन पर होंगी उनके लिए थोड़ी सी एक कंपटीशन निकल कर आएगा। लेकिन उससे पहले 1st और 2nd है जो हमारी अभी तक टीम एनटीटी और सोल, उनके बीच में फासला थोड़ा सा कम हो रहा है मेरे ख्याल से। ऑफ कोर्स उसी डिटेल्स में हम जाएंगे, एक बार पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते, क्योंकि इस बार हमने मेटा में बहुत ही बड़ा शिफ्ट देखा है। चिकन डिनर के पॉइंट्स कम कर दिए गए और किल्स का मेटा जो आया है वो नया मेटा है। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरे 10 पॉइंट का यहाँ पे इजाफा हुआ है। अगर हम देखें 30 पॉइंट होते थे, अब 20 हो चुके हैं, तो 10 पॉइंट ऑलरेडी कट चुके हैं आपके चिकन डिनर के जो पॉइंट सिस्टम है उससे। और यहाँ पे सेकंड में भी 1st और 2nd के बीच में 6 पॉइंट का फासला है, जहाँ पे आपको 6 किल्स ज्यादा लेने पड़ते हैं जो फर्स्ट वाली टीम है उनसे। और यहाँ पे थर्ड पे देखें तो 4 पॉइंट गिर, तो वो ये एक फासला बहुत ज्यादा कम हो गया। तो किल आपको लेने पड़ेंगे वरना आप बहुत पीछे बैठ जाओगे, बिकॉज सर्वाइवल पॉइंट्स में इतना ज्यादा आप रिलाय नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स सर्वाइवल पॉइंट्स पर रिलाय नहीं कर सकते, और ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा चेंज। और प्राइस पूल की बात करें तो टोटल प्राइस पूल है 1.2 करोड़ रुपए। पहली पोजीशन को मिलेंगे 42 लाख रुपीस। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट है। और आप बात कर लीजिए 16 की 16 टीम, तो इवन द 16 टीम
उनको मिलेंगे $2000। तो मतलब प्राइज मनी गारंटीड है, बट ऑफ कोर्स इट इज अबाउट द प्राइड ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, ना ही टीम्स के लिए, दर्शकों के लिए भी, क्योंकि लास्ट टाइम इंडिया के पास अपना खुद का स्लॉट था, लेकिन इस बार उन्हें लड़ना पड़ेगा बाकी 3 और देशों से। हमारे पास नेपाल की भी टीम्स है, तो ऑफ कोर्स इंडियन फैंस और भी ज्यादा उत्तेजित होंगे। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ओशन, क्योंकि अब दिन धीरे धीरे कम होता जाएगा, एक एक मैच यहाँ पे कम होता है, तो टीमें पीछे बैठी हुई ये सोचेंगी कि अब 6 मैचेस बचे हैं, फिर 5 4 3 2 वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, एंड वहाँ पे टीम्स को वो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। बिकॉज जब हम बात करते थे 18 मैचेस हैं, 18 के 12 हुए, 12 से 6, एंड अब फिर से इस दिन के अंत में हमारे पास हमारा विनर होगा ऑफ कोर्स। और ये जो काउंटडाउन तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है आज, अब 6 मैचेस है, यू हैव नो लीवे। एक बार टीम्स के ऊपर भी नजर कर लेंगे कि कौन सी टीम्स है जो टॉप 16 में है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारी टॉप 16 के लिए जो क्वालिफाइड टीम्स हुई हैं, ETG ब्रॉलर्स जिन्होंने बहुत प्यारा गेम प्ले दिखाया था प्लेन्स के अंदर, IND क्राउड फेवरेट्स के अंदर आती है, गॉड लाइक की टीम में क्राउड फेवरेट्स आती है, बट वो अभी के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। फनाटिक की तो कोई मतलब इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, नेपाल से नेपाली होनी बहुत अच्छे से खेल रही है यहाँ पर। 0 डिग्री एक ऐसी टीम अकेली जो किल्स के ऊपर जाती है एंड अपना एक छाप छोड़ना चाहती है। मेहम की स्क्वाड INS एंड